Hare Krishna. You see me in a professional attire today. I had an overnight emergency. So, fortunately, I could finish it by 5 o'clock and happy that we are still together. Hare Ram. You see, we have to dress up according to the occasion. Baba used to say, I'm sorry to say, used to say, this God is always present, he's never past. So Baba says, amongst women, I behave like a man. Among men, I am a friend. Amongst children, I am a father. You have to put on a robe differently everywhere. But in reality, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान. In reality, you are love. ज्योत क्या होती है? Love. Flame. ज्योत. In reality, you are love. But you have to put on guards according to the situation, isn't it? And you don't act, you naturally are. You don't have to behave like a farmer. But if you're a farmer, you will behave like a farmer. If you're a teacher, you behave like a teacher. It's not actually an acting, it's reality. If you're a surgeon, you will behave like a surgeon. But there is a reality hidden deep within also. That is love. And if you hold on to that, then every role which you play will be laced with love. Every role. I had as per ranks, I had a sepoy in my office who had done something which required punishment. So I had to punish him with a rigorous imprisonment. I got him a rigorous imprisonment for 28 days. Rigorous imprisonment, you cannot imagine how bad it is. Not just being in a jail, but it is rigorous imprisonment. He's tortured also. Let me confess that in the army, when you give an RI to somebody, it's a torture. Physical as well, not only mental. But then I hugged him. I had tears in my eyes. I petted him. I patted him, apologized to him, felt sorry that, because I mean, after all, the law has to take its course. So you have to, it's not acting, you have to behave the way the situation demands. But in reality, you have to keep holding to that truth which you are, which is love. Hare Krishna. मन तो ज्योत स्वरूप है. मन कौन है? हम मन ही तो है ना. मैन इज मन ओनली. एड्रेस तो हम मन को ही कर रहे हैं ना. इंटेलेक्ट उसको समझ रही है. अहंकार थोड़ा सा हिल रहा है और चित्त में प्रेम होता है. ये अंतःकरण चतुष्टय होता है. आपके अंदर चार फैसेट्स हैं. मन, जिससे मैं बात कर रहा हूं. आप शरीर नहीं, शरीर तो सुन नहीं ना सकता. सुनेगा तो मन ही. Through the ears, it is mind which is listening. And the intellect is kind of conceptualizing. And the ego is melting. And the heart is, if it is open to
Suggestion. Suggestion can be called hypnotism also. So if the heart is open to this hypnotism, if you close the heart, then nothing will happen. If you open your heart, yes, you'll start feeling a warmth. And that warmth is all that we need, all of us. Every human being is thirsting for that warmth. There was a Saint Augustine, a very popular figure in Christian lore. Saint Augustine. It's about 200, 300 years after Jesus. That means about 2000 years back. So, one of his statements, just quoting to you, uh, then I'll unfold it. He said, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. Adventure is to be able to go to Mount Everest. Adventure is to be able to drive your car in various terrains. Various type of adventures one feels like pursuing. But the greatest adventure is to seek God and to find God is the greatest attainment of a human being. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest attainment. Thereafter, कुछ नहीं चाहिए मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. But how would you fall in love with God? God is Nirankar. Allah means Nirankar, the only one who is worshipable and the only one who cannot be reached, cannot be comprehended, cannot be touched. अलह भी है वो और अल इल्लाह भी है. Alillah, Allah. Ilah means worshipable. The only one who needs to be pursued, sought, is God. But He is not a tangible being. You cannot fall in love with anyone who's not tangible. Tangible means neither can you see, nor can you hear, nor can you touch, nor can you taste, nor can you smell. So how would you love Him? So Guru Nanak says He's Nirankar, Ik Omkar, Nirankar. But He's Akal Murat. Murat means He can be seen. Murat can be seen. Paradoxes. He cannot be seen, but He can be seen. Akal Murat, Ik Omkar. But then he qualifies the statement by saying Guru Prasad. Through the agency of the Guru, who can be seen, who can be heard, who can be touched, who can be understood. Through the agency of the Guru, you will be able to see the Murat, which is called Ikumkar or Om. Om is a Murat, not just this tree with a tail. No, but there is something more to it. You will be able to experience Ikumkar, but how? Through the agency of the Guru. So that means you can love the Guru only. You cannot love Ikumkar. You cannot love Ikumkar because you don't even know what it is. So Allah, how can you reach Him? La ilaha illallah. Allah alone is worshipable. La ilaha illallah.
But Muhammad Rasul Allah, without prophet, you cannot reach Allah. You cannot love Allah. So Jesus would say the same. The way to the Father is only through me. So, in any religion, you have somebody whom you can love. You can love Jesus, you can love Sri Krishna, you can love Guru Granth Sahib as the Guru because it is tangible. You can hold it, you can put it on your head, you can make a room for him. Him means Guru Granth Sahib, isn't it? So, or you can love Shivji as Shivling. So there is something which you can hold. Not all the time, for a while at least, every other moment, you should be able to. Or some people can keep a photograph of somebody in their purse whom they love. So something which you can time and again connect with. When I'm feeling blue, no, blue has various meanings. You can stretch your imaginations. When I'm feeling blue, there the poet means that जब मन नहीं लग रहा होता, when I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue, isn't it? That's the song lyrics. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. फिर ये बात बन जाती है, तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ, मेरी बात बन जाती है। और फोटो तो फोटो ही है सिर्फ, मगर मेरे को कुछ हो जाता है। तेरा नाम इतना है मुख्तसर, इतना छोटा सा तुम्हारी फोटो है, तुम्हारा नाम भी वाहेगुरु, इतना छोटा सा नाम, वाहेगुरु, हरे कृष्णा, इतना छोटा सा नाम, राम तो सबसे ही छोटा नाम, राम। बहुत सारे लोग हैं ओल्ड फैशन जो सारा दिन राम राम बोलते रहते, ओल्ड फैशन, वैन मेरे जैसे सारा दिन राम राम बोलते रहते, हरे कृष्णा, वाहेगुरु। सो तेरा नाम इतना है मुख्तसर, छोटा सा तो नाम है, मगर तेरा जिक्र इतना तवील है, मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हारा नाम याद करके बस। When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so. Wouldn't you agree, baby? You and me got a groovy kind of love. पता नहीं कैसा प्रेम है ये, ग्रूवी काइंड, मतलब अलग ही नहीं हो पाते हम, बस ऐसे जुड़ गए हैं दिल के अंदर। बाहर तो पता नहीं तुम दिखो या ना दिखो, तुम्हारी मर्जी। कभी तुम दिखोगे, कभी नहीं दिखोगे, तुम्हारी मर्जी। बिकॉज व्हेन यू लव समबडी, यू लीव हिम और हर फ्री, कि तुम्हारी मर्जी। बट मुझे गम है कि तुम मेरे करीब नहीं हो, मेरे पास नहीं हो, मगर तुम ख्यालों में जो हो वो क्या कम है। ख्यालों में कैसे हो, क्योंकि तुमने एक शक्ल ली तो मेरे ख्यालों में आए। अगर शक्ल नहीं लेते तो मैं ख्यालों में कैसे रखता था। चाहे वो शक्ल कोई भी हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब बुक फॉर्म में ही हो, चाहे वो शिवलिंग ही हो, चाहे वो श्री कृष्णा की शक्ल हो, कोई भी फॉर्म में, when you form in the form only you will be able to love God. So Saint Augustine said, I should say says, because this is not a statement which you can say in the past. It's a universal statement. It's a Mahavakya. It is true always and it will always be true. आदि सच है, जुगाद सच है भी सच, होसी भी सच, ये हमेशा ही सच रहेगा। सो सेंट ऑगस्टीन तो चलो अभी बॉडी में शायद नहीं है, बट जो उन्होंने बोला वो तो सच है, अभी भी सच है।
To fall in love with God is the greatest romance. Whosoever has fallen in love with God, वो बस कुछ और ही हो जाता है। वो कुछ और ही हो जाता है। अलौकिक बोलते हैं उसको। अलौकिक, अद्वितीय भी बोलते हैं, अनुपम भी बोलते हैं। मतलब उसका कोई कोई और उपमा ही नहीं दी जा सकती, उसको किसी वर्ल्डली चीज के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। Then he is no more a farmer, then there is no more a carpenter. Because these are professions. This is a garb, this is a clothing. He is not the clothing. He is in love with God. So to fall in love with God is the greatest romance. To seek God. उसको जानने की कोशिश करने जिनी पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हरि नाम दृढ़ावे राम राज्य। जिसको पूरा का पूरा गुरु मिल गया, पूरा का पूरा, उसके अंदर कुछ हो जाएगा। वेरियस गुरुज हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मगर कहने को कुछ है नहीं एक्चुअली। गुरुओं ने भगवत गीता लिख दी, श्री कृष्णा ने 18 चैप्टर्स लिख दिए, और उसको समझ के उद्धव जी ने अपनी गीता बना दी। उद्धव गीता, उसको समझ के भगवत गीता, मतलब श्री कृष्णा को समझने को। मगर प्यार कोई समझने की चीज तो है नहीं ना। जब प्यार हो जाएगा तो हो जाएगा। जिसको हो गया हो वो क्या समझा सकता है कि कैसे प्यार प्यार करते हैं? प्यार कोई समझने की चीज है ही नहीं। और जो चीज समझने की नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? चित्त वृत्ति निरोधा। वो चित्त से परे है ना, चित्त से भी परे। मैंने बोला कि आपके अंदर चार ही फैसेट्स हैं कुछ भी चीज जानने के लिए। एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, एक चित्त है। चित्त मतलब दिल। अभी दिल भी कभी किसी पे आ गया तो कभी मूड ऑफ हो जाता है तो दिल भी थोड़ा बुझ जाता है। सही आ रहा तू तो बदला नहीं है, मगर मौसम जरा सा रूठा हुआ है। मौसम क्या होता है? मन। मन कभी किसी बात पे रूठ जाता है, मगर दिल के जो परे चले जाए, चित्त वृत्ति निरोध, उसको परा प्रेम बोलते हैं। परा प्रेम। भक्ति क्या होती है? परा प्रेम रूपा। भक्ति इज परा प्रेम। सो टू लव गॉड with all your mind, with all your intellect, with all your ego, with all your heart is of course the greatest romance. बट देन उससे भी तो बात नहीं बन रही है, क्योंकि कभी कभी मौसम रूठ जाता है। कभी दिल का कुछ करता है, कभी दिल कुछ करता है। क्यों फिर रोते हैं कि मेरा दिल सारा दिन क्यों नहीं प्रेम में रह सकता? नहीं, दिल की बस की बात नहीं है ये। इसलिए महर्षि बोलते हैं, महर्षि पतंजलि, कि योग संभव नहीं है दिल से, चित्त से। तो इसलिए तुमको चित्त से परे जाना पड़ेगा प्रेम को समझने के लिए। फिर पता चल जाएगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो क्या है। क्योंकि गुरु तो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तो नहीं है ना, वो इन सब से परे है। सेंट ऑगस्टीन जिसने ये बोला होगा दैट टू लव गॉड इज द ग्रेटेस्ट रोमांस, वो पहुंच चुका होगा ना परे, तभी तो बोला। अगर गुरु नानक ने बोला कि एक ओंकार ही सतनाम है तो उसने एक ओंकार को देखा होगा ना। इजंट इट? अदरवाइज तो झूठ है, अगर देखा ही नहीं ऐसे ही बोले जा रहे हो अल्लाह अकबर, तो झूठ है। अल्लाह जिसने देख लिया हो वही तो कह सकता है अल्लाह अकबर। जिसने सचमुच मिट्टी धुंध हो, सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। अरे जिसकी धुंध मिट्टी हुएगी तभी तो वो बोलेगा, नहीं तो सब झूठे हैं, ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। सतगुरु नानक प्रगटे मिट्टी धुंध उठ जग चानन हुआ है, तो वैसे हम जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसने कभी स्टार की तरफ देखा भी नहीं, बस वो ऐसे बोलता रहता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये थोड़ा बात बनेगी। सचमुच देखा होगा ना, किसी की धुंध मिट्टी होएगी, तब उसने बोला होगा सब तो बड़ा सतगुरु नानक। उसने सतगुरु नानक को एक्सपीरियंस किया होगा, तभी तो बोला होगा सब तो बड़ा सतगुरु नानक। किसी ने देखा होगा अल्लाह ही अकबर है, सब तो बड़ा है, तो फिर हम आपस में कोई कंट्रोवर्सी कर देंगे कि वो तो कह रहे हैं अल्लाह बड़ा है, तो आप कह रहे हो सतगुरु नानक सबसे बड़ा है। भाई जिसने भी अपने प्रेम को देख लिया, वो तो अपने प्रेम को ही सबसे बड़ा बोलेगा ना। जो शिवलिंग की पूजा करते करते शक्तिपीठ के एक्सपीरियंस हो गया जिसको, उसको ही तो पता चलेगा कि शिवलिंग से बड़ी कोई चीज नहीं। हरे राम। सो सेंट ऑगस्टीन सेज, to fall in love with God is the greatest romance, to seek Him is the greatest adventure, and to find Him, मिल जाना मतलब जिसको मिल गया, जिसको अल्लाह मिल गया, जिसको शिव जी मिल गए, जिसको गुरु नानक मिल गए, जीसस सामने आ गए, दैट्स द ग्रेटेस्ट अटेनमेंट। उसको फिर थोड़ा कुछ भी चाहिए ना, नो ही इज नो मोर अ फादर, नो मोर अ सन, नो मोर अ मैन, नो मोर अ वुमन, ही इज एन अलौकिक बीइंग, another worldly reality which never takes birth, never dies, imperishable, eternal reality, eternal and sempiternal, शाश्वत and नित्य, फिर भी एवर न्यू, मेरा साहिब, नित नवा, सदा सदा दातार, my beloved is the same always yet ever new. Hare Ram, Hare Krishna. Fall in love with God. Bless yourself. Hare Ram, Vaheguru, Hare Krishna, Hare Ram.